Radhe, Radhe to all the students present in this class. Let's start the class with the holy. Did you have yesterday this mantra? Did you have the mantra or not? No, didn't have. Om Krishnaya Vasudevaya. Om Krishnaya Vasudevaya. Hare Paramatmane. Hare Paramatmane. Pranatah Kleshanashaya. Pranatah Kleshanashaya. Govindaya Namo Namaha. Govindaya Namo Namaha. काग्रे वस्ते लक्ष्मीः काग्रे वस्ते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दः करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम् प्रभाते करदर्शनम् राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे Sit down. राधेश अतुल जी वेलकम स्वागत है आपका इस वंडरफुल लाइव स्ट्रीम में So dear students, today we are going to start a new chapter and the chapter is clause. What are we going to learn today? Clause. Louder. Clause. One more time. Clause. Once again. Clause. Clause. Shall we start? Oh, sure, sir. Let's start this chapter. Put the heading in the notebook. What is the heading? Clause. Welcome Atul ji, Radhe Radhe, Pratibha, good morning, Radhe Radhe, Vikash, Income Tax Inspector, Bablu, Shyam. Clause लिखा हिंदी में लिखिए उपवाक्य. So who is the highest scorer in your batch? Aryan and I both have got 10 out of 10. Big hand for both of them. Come in. Please. What? Oh, Pratibha has given. Didn't you take the test? You didn't take test. Aditya has got 6 marks. Take care. Third rank holder. Where is your badge here? Why will you hand me over? You will have your badge. You know the rules of DSEL. If someone scores the equal marks, then that student has the badge. You are the first rank holder, I use the second rank holder, Aditya third rank holder and fourth rank holder, 5 marks, 6 marks. Pratibha will be fourth rank holder, 6 marks. How many marks? Yeah. Pratibha will get the fourth rank holder badge. Who had the badge of fourth rank holder earlier? Who was the fourth rank holder, Sweta? Kajal? I'm not sure. So who was the fourth rank holder? Sure. Yeah. He is absent. They bunk off the class without informing. This is not good. And who will be the fifth rank holder then? You. How many marks have you got? This time 2 marks only. Shit. You? 5. Give her 5 marks. Take the badge. Come in. So batches are exchanged and Aaron will receive the medal, but after some time. Let's start the class. Clause. हिंदी में लिखिए ब्रैकेट में उपवाक्य. Clause means $10. Someone spoke Hindi.
राइट। पिंकी, प्रदीप, बबलू, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, स्वागत है आप सभी का इस वंडरफुल लाइव स्ट्रीम में। तो लिखिए क्लॉज। कोई पूछे क्लॉज क्या कहलाता है तो बता दीजिएगा। देखिए, इन अ सेंटेंस देयर आर सम स्मॉल सेंटेंसेस, in a sentence there are some small sentences, in a sentence there are some small sentences which are called clauses. In a sentence there are some small sentences which are called clauses. राधे राधे स्वाति, धीरेन्द्र जी ऑफिशियल एमपी, राधे राधे राजकुमार जी, राधे श्याम, राधे। So in a sentence there are some small sentences which are called clauses. बोर्ड पे लिखें, ठीक है ना? No, so they are in 8 to 9. In a sentence there are some small sentences which are called clauses. सुनिए आप, सुनिए बस, सुनो, listen to us. लिखना हो तो लिख लो, you can write. Yeah. एक वाक्य में कुछ छोटे छोटे वाक्य होते हैं और यही छोटे छोटे वाक्य क्लॉज कहलाते हैं। ओके, इसके आगे लिखिएगा फुल स्टॉप लगा के, पैराग्राफ चेंज करके। टू बी अ क्लॉज, आप सुनोगे, टू बी अ क्लॉज देयर मस्ट बी अ फाइनाइट वर्ब, there must be a finite verb. To be a clause there must be a finite verb. क्लॉज के लिए बच्चों एक फाइनाइट वर्ब का होना मस्ट है, जरूरी है। यदि फाइनाइट वर्ब नहीं होगी तो क्लॉज नहीं होगा, भले कुछ ना हो, लेकिन एक फाइनाइट वर्ब जरूर होनी चाहिए जो बताए। फाइनाइट वर्ब, यू नो व्हाट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब? व्हिच डिनोट्स टेंस, जो बताती है कि टेंस कौन सा है, जिससे पता चल जाए टेंस कौन सा है। तो एक फाइनाइट वर्ब जरूर होनी चाहिए। ओके, और क्लॉज कोई एक वर्ड नहीं है, क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ना, एक छोटा सा सेंटेंस होता है, स्मॉल सेंटेंस, ठीक है, क्लॉज होता है, उसमें एक फाइनाइट वर्ब जरूर होनी चाहिए, भले कुछ हो ना हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल लिखिए। शी सेड दैट, शी सेड दैट, शी सेड दैट she would dance, she would dance, she said that she would dance, she said that she would dance। अब प्यारे बच्चों देखें तो ये एक वाक्य है, ये पूरा एक वाक्य है, she said that she would dance, बट इस एक वाक्य में दो छोटे छोटे वाक्य हैं। पहला वाक्य है she said, उसने कहा, दूसरा वाक्य है she would dance, वह नाचेगी। तो she said को अंडरलाइन करके नीचे लिखिए क्लॉज, she would dance को अंडरलाइन करके नीचे लिखिए क्लॉज। she said एक क्लॉज है, she would dance एक क्लॉज है। she said that she would dance, ये था एक सेंटेंस, इसमें दो क्लॉज हैं। she said एक क्लॉज है, she would dance दूसरा क्लॉज है। लिख लिया। अब यही हम सीखने जा रहे हैं कि भैया ये दो जो क्लॉज हैं ये कौन से क्लॉज हैं, इनका कुछ नाम है या बस क्लॉज क्लॉज ऐसे हम बोलेंगे, राइट? जैसे हमने पढ़ा नाउन प्रोनाउन, अब पूछ ले कोई कौन सी नाउन, तो बोले भैया बस नाउन है। तो भैया नाउन तो सबको पता है, इतना तो एलकेजी यूकेजी के बच्चे बता देंगे ये नाउन है, लेकिन अब ये बता सको कि कौन सी नाउन है तो फिर पता चले कि हाँ आप चीजें जानते हो। तो हमें यही सीखना है कि शी सेड जो है वो कौन सा क्लॉज है, शी वुड डांस जो आया है वो कौन सा क्लॉज है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉज,
हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज के प्रकार। क्लॉज मीन्स होता है बच्चों उपवाक्य, याद रखना उपवाक्य मतलब मिनी सेंटेंस, स्मॉल सेंटेंस। ओके, ये ध्यान रखना, ये ना कोई कहने लगना एक वर्ड को बोलो ये दैट जो है वो क्लॉज है। लिख लिया, देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑब्लिक मेन क्लॉज, PRINCIPAL ऑब्लिक मेन क्लॉज, प्रिंसिपल ऑब्लिक मेन क्लॉज। ठीक है, पहला प्रधान उपवाक्य, इसको बोलते हैं प्रधान उपवाक्य, मेन क्लॉज। लिखिए द क्लॉज which doesn't depend on any other clause, the clause which doesn't depend on any other clause, the clause which doesn't depend on any other clause, the clause which doesn't depend on any other clause, then to complete its meaning, to complete its meaning, on the contrary, on the contrary, CONTRARY, on the contrary, what does it mean on the contrary in Hindi? No. Exactly. Bulky. Bulky. Short. No, I just asked. Okay. Bulky. On the contrary means bulky. Written? On the contrary, other clauses do. On the contrary, other clauses do. On the contrary, other clauses do. I repeat, listen to me. The clause which doesn't depend on any other clause to express its meaning, on the contrary, other clauses do. या complete its meaning, express its meaning, कुछ भी लिख सकते हो. Other clauses do. It's called कौन सा क्लॉज कहलाता है? प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज. अब कोई बोले कैसे? अब उसी सेंटेंस को लिख दीजिए जिसको आपने पहले लिखा है क्लॉज क्लॉज, फिर से लिखिए उसी सेंटेंस को, तब थोड़ा सा आपको समझा दे. उसे देने को आई कैन गिव यू अनदर एग्जांपल, बट अब लिखा है सेंटेंस तो पहले उसे ही क्लियर करें कि ये इसमें कहाँ है मेन क्लॉज. रिटन क्लॉज क्लॉज have written he said that, sorry, he or she said that she would dance. देख लिया. अब देखिए बच्चे ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं केवल इतना हिंदी बोलूं कि वह नाचेगी, कि वह नाचेगी, कि वह नाचेगी, तो आपको लग रहा होगा कि इसके पहले कुछ है जो मिस हो रहा है. right? और जैसे ही मैं बोल दूं उसने कहा कि वह नाचेगी, तो जैसे ही मैंने कहा उसने कहा, तो कि वह नाचेगी कंप्लीट हो गया, है ना. बड़े दिन मैं केवल इतना बोलूं उसने कहा, उसने कहा को किसी की जरूरत नहीं है. किसने कहा? उसने कहा. उसने कहा अपने में कंप्लीट है, लेकिन कि वह नाचेगी को जरूरत है सामने वाले की. जब तक ये नहीं बोलोगे उसने कहा तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. कि वह नाचेगी, तो कि वह नाचेगी किस पे डिपेंड है? ही सैड पे. दैट शी वुड डांस किस पे डिपेंड है? शी सैड. तो शी सैड कौन सा क्लॉज होगा? मेन क्लॉज. इसको किसी की जरूरत नहीं है. अंडरलाइन कर लीजिए शी सैड, और शी सैड के नीचे अंडरलाइन करके लिख लीजिए मेन क्लॉज. कौन सा क्लॉज? मेन क्लॉज. अब मैं कुछ पॉइंट्स दूंगा जिससे मेन क्लॉज आइडेंटिफाई करना आपको सेंटेंस में बहुत आसान हो जाएगा. बस इन 3 पॉइंट्स को याद रखना, फिर आपको मेन क्लॉज फाइंड करने में कभी कोई गलती नहीं होगी. ठीक है. A clause can be the main clause in the following conditions. Heading डालिए. A clause can be the main clause in the following conditions. A clause can be the main clause in the following conditions. A clause can be the main clause in the following
conditions. A clause can be the main clause in the following conditions. A clause can be the main clause in the following conditions. A clause can be the main clause in the following conditions. A clause can be the main clause in the following conditions. कोई भी क्लॉज निम्न परिस्थितियों में मेन क्लॉज हो सकता है. First, if a sentence doesn't start with conjunctions, if a sentence does not start with conjunctions, if a sentence does not start with conjunctions, comma, the first clause of the sentence is called main clause. The first clause of the sentence is called the main clause. The first clause of the sentence is called main clause. The first clause of the sentence is called main clause. The first clause of the sentence is called main clause. I repeat in Hindi, listen to me. ऐसा वाक्य जिसकी शुरुआत कंजंक्शन से ना हो, जिसका पहला शब्द कंजंक्शन ना हो, देख लें, तो उसका पहला क्लॉज हमेशा मेन क्लॉज कहलाएगा. आंख बंद करके बोल दो भैया मेन क्लॉज हो तुम. अब देखिए, शी सेड जब आप बोलते हो तो क्या शी के पहले कोई कंजंक्शन लगा है? एज लॉन्ग एज, नॉट ओनली, एज सून एज, कुछ लगा है क्या? कुछ नहीं लगा. तो आप बोल दो भैया पहला क्लॉज मेन क्लॉज है. बता. Where do you have to go? Right now. Does he have work related to collectorate? Any other work? Okay. Go. Land distribution. Yeah, such a serious issue, seriously. Property work. If any dispute, then you just go to court. I don't understand why people don't peacefully divide everything. They should divide property peacefully without argument or anything. Right? You are spending money in the courts. That money you can use somewhere else. भाई भाई में इतनी दुश्मनी हुई भैया तुम्हें हम नहीं मांग रहे. What is this? That's not good. Exactly. कलयुग ये तो नॉर्मल सी बात है. They murder others just for property. Oh my gosh. Right. Example एक और लिख लीजिए. I was sleeping when you came. 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 Yesterday I saw your school, Vedic, you know. I went to Riva. So while coming back, I saw your school, Bal Jyoti, huh? Bal Jyoti High School. Yeah, this is Vedic. This is the same boy who comes from Gur, belongs to Gur. Nowadays he lives with his maternal family. Who? Why will he go to Riva when DSEL is in Sidhi? Come on. People from Riva come to Sidhi to learn English. In Sidhi. And you are sending them Riva. Why should they go to Riva? Right? Aryan? When we have DSEL in simple language. Okay.
So where is tell me where is principal clause in this sentence here students? I was sleeping क्योंकि I के पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा है, आंख बंद करके बोल दो भैया आप जो हो ना, आप जो हो, आप मेन क्लॉज, मेन वर्ब नो बेटा, मेन क्लॉज. Crazy eagle, Rishi, Jai Hind Rishi, Radhe Radhe, how are you? Where are you these days? Next, second point लिखिए. I used to sitting there. Okay. Second point. Let her write. Write with her write. Writing will help you improve your spelling mistakes. Because grammar is all about spelling mistakes. Minor mistake marks will be deducted. लिखना चाहिए. We should write. We must write. आप लोग एक दो बार में satisfied हो जाते हो. 10 times लोग लिखते हैं तो भी वो लिखते हैं. Writing से learn होती हैं चीजें. Next, second point. If all the clauses of a sentence, if all the clauses of a sentence, if all the clauses of a sentence, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ करे उसे अंडरलाइन कर लिया करो, राइटिंग ओला लगा लिया करके. आपको डाउट था इस वर्ड में, उसे देखो, सुधारो, लर्न करो, धीरे धीरे आप परफेक्शन की ओर बढ़ जाओगे. इफ ऑल द क्लॉजेस ऑफ अ सेंटेंस, why Rishi, why can't you come? Radhe Radhe Ayush. If all the clauses of a sentence start with conjunctions, oh my gosh, we were practicing music, it's too late last night. Oh, Rishi, why are you doing all these things, Rishi? Focus on your studies. If all the clauses of sentence start with conjunctions, the first clause of the sentence is called main clause. Written? Of the sentence is called main clause. The first clause of the sentence is called main clause. The first clause of the sentence is called main clause. The first clause of the sentence is called main clause. The first clause of the sentence is called main clause. The first clause of the sentence is called main clause. The first clause of the sentence is called main clause. The first clause of the sentence is called main clause. देख लिया? लिखिए. अब देखिए ये जो सेकंड जो नोट हमने लिखवाई वो पहले नोट के जस्ट अपोजिट है. पहला नोट ये कहती है कि यदि सेंटेंस की शुरुआत कंजंक्शन से ना हो तो पहला क्लॉज कंजंक्शन प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है. और दूसरी नोट बोलती है यदि किसी सेंटेंस के सारे क्लॉज जितने हैं कि शुरुआत कंजंक्शन से हो तो पहला क्लॉज जो होगा वो मेन क्लॉज कहलाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए. नो सूनर डिड आई ज्वाइन DSEL. No sooner did I join DSEL. No sooner did I join DSEL. No sooner did I join DSEL. Then, THAN, then I started to speak English. 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 Best of luck, beta. Go.
give you 100%. लिख लिया? Now listen. What have you written? अब यहां देखिए बच्चों, यहां दो क्लॉजेस है, एक है डिड आई ज्वाइन डीएससीएल और दूसरा है आई स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश, राइट? अब यहां देखिए दोनों कंजंक्शन क्लॉजेस के पहले कंजंक्शन लिखे हैं, पहले के पहले लगा हुआ है नो सूनर और दूसरे के पहले कंजंक्शन लगा हुआ है देन, राइट? तो एक सेंटेंस है जिसके सारे क्लॉजेस के पहले कंजंक्शन लगा है, तो पहला जो क्लॉज होगा डिड आई ज्वाइन डीएससीएल, ये कौन सा क्लॉज होगा? प्रिंसिपल क्लॉज। अंडरलाइन करके लिख। अब कोई बोले मान लीजिए एक में लगा हो दूसरे में ना लगा हो, फिर आप बोलेंगे भैया वो दूसरा क्लॉज हो सकता है, दोनों में लगा होना चाहिए, एक में लगा तो नहीं। लिख ली। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, इफ देयर इज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, if there is a question mark at the end of a sentence, who got the first prize? Ayush is asking. Aryan got the first prize. You have also scored the equal marks, but you know the rules. Ayush. What a bad luck, sir. Ayush. Why? 2 times. 2 times it happened. Yes, sir. Equal marks. Yeah. Okay. Because he even 100%. Okay, You have got 10 out of 10. Ayush, 10 out of 10. 10 out of 10. If there is a question mark at the end of a sentence, at the end of a sentence, at the end of a sentence, if there's a question mark at the end of a sentence, the first clause of the sentence is called, the first clause of the sentence is called main clause. The first clause of the sentence is called main clause. The first clause of the sentence is called main clause. Okay, Shweta? The first clause of the sentence is called main clause. अब ध्यान से सुन लें, ऐसा वाक्य जिसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, उस वाक्य का पहला क्लॉज मेन क्लॉज कहलाता है। एग्जाम्पल लिखिए, Who said that I spoke Hindi? Who said that I spoke Hindi? किसने कहा कि मैंने हिंदी बोला? Who said that I spoke Hindi? There is question mark. अब यहाँ दो क्लॉजेस हैं बच्चों, एक है who said और दूसरा है I spoke Hindi. अब कोई बोले who said क्लॉज होगा, बोले बिल्कुल फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, फाइनाइट वर्ब जो टेंस बता दी, who said पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो who said एक क्लॉज है, I spoke हिंदी दूसरा क्लॉज है, कौन सा मेन क्लॉज होगा? Who said। अंडरलाइन करके लिख दीजिए, who said। हेलो, बैड हैबिट, control your body parts or else I'll fix them. Yeah, I'll tighten them with a screwdriver. Spanner, not screwdriver. Yeah, spanner means spanner called wrench pana. Screwdriver is called as screwdriver. स्क्रू एक फ्रेज भी है, लर्न कर लीजिए, स्क्रू अप, तंग करना किसी का, ही वाज स्क्रूइंग मी अप, हिट हिम, स्क्रू अप,
Written. Second, parenthetical clause. Parenthetical. Parenthetical. Parenthetical clause. Parenthetical clause. असंबद्ध clause. असंबद्ध उपवाक्य. नाम से ही समझ गए होगे आप कि इसकी डेफिनेशन सर क्या लिखवाने वाले हैं. जिसका किसी से कोई संबंध ना हो उसे कहते हैं असंबद्ध. हाँ बिल्कुल, आपका क्वेश्चन जायज है. क्यों यूज करते हैं, मैं आंसर देता हूँ. क्यों यूज करते हैं? यूज इसलिए करते हैं क्योंकि बोलते बोलते कई बार हमारे पास शब्द खत्म हो जाते हैं, तो पॉज लेने के लिए पैरेंथेटिकल क्लॉज यूज करते हैं. हम ऐसे बोल देते हैं, आई थिंक ही वॉज स्लीपिंग. अब आई थिंक की कोई मीनिंग नहीं है. ही वॉज स्लीपिंग आप बोलना चाहते थे, राइट? यू नो ही वॉज लाइक दैट. यू नो की कोई मीनिंग नहीं होगा, सब पॉज लेने के लिए यू नो आपको यूज कर दिया. ये पैरेंथेटिकल क्लॉज कहलाते हैं, जो सेंटेंस में केवल थोड़ा सा सोचने के लिए यूज कर लिए जाते हैं. धोनी को आपने सुना होगा बहुत बोलते हुए, यू नो आवर टीम प्लेड वेरी वेल, यू नो दिस थिंग हैपेंड, यू नो वी जस्ट डिसाइडेड, यू नो. ये यू नो जो यूज करें इसका कोई मतलब नहीं है. बार बार यदि आप सोचे कि बार 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 बोल रहे हैं, तुम जानते हो, तुम जानते हो, कुछ भी नहीं. लिखा तो लिखिए, पैरेंथेटिकल क्लॉज में लिखिए, द क्लॉज which has got nothing to do with, the clause which has got nothing to do with, the clause which has got nothing to do with the other clauses of the sentence, the other clauses of a sentence, and if we remove it, and if we remove it, the meaning of the sentence doesn't change. What is it doing? Come on. Why are you running like this? And if we remove it, the meaning of the sentence doesn't change. Full stop. And if we remove it, the meaning of the sentence doesn't change. And if we remove it, the meaning of the sentence doesn't change. I repeat, the clause which has got nothing to do with the other clauses of a sentence, the clause which has got nothing to do with the other clauses of a sentence, and if we remove it, the meaning of the sentence doesn't change. Okay? ऐसा उपवाक्य जिसका वाक्य के किसी भी उपवाक्य से लेना देना ना हो, और यदि हम उसे हटा दें, इसमें आ रहा है ये सब तरतमाशा, तो वाक्य की मीनिंग में कोई परिवर्तन ना हो. हटा देने पर भी वाक्य की मीनिंग में कोई भी परिवर्तन ना हो, कहलाता है असंबद्ध उपवाक्य. लिखिए एग्जाम्पल. शिव शंकर जी, हमको भी ज्वाइन करना है जी. बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं. नया बैच स्टार्ट है मॉर्निंग पे 8 to 9. यू कैन कम एंड ज्वाइन. 4,000 रुपीज कोचिंग फीस है कंप्लीट कोर्स की. 6,000 रुपीज फॉर लाइफ टाइम. जिंदगी के साथ भी, इन जिंदगी के साथ तक. 4,000 for 1 year. 4,000. Yeah. Yes. Okay. What happened? I paid 4,500. Where? Where? When?
No, so you have paid, you are paying for lifetime, no? That's why I think so. Yeah, so I'm giving you. Yeah, you can. I'll give you. You can pay 1500. That is why I didn't say anything. I just thought that you have some. Yeah, I thought you have some problem. That's why you're facing. No, no, we have 4500 rupees we charge in installments. If you pay in two installments, then 4500 rupees. 2500 rupees at the time of admission, and 2000 rupees after 1 month. We give the time of a month here. We do charge 4500 rupees. It's correct, but installments, not at the time of admission. क्या स्टडी कराते हैं? ऑफ कोर्स इंग्लिश बेटा, इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ. आप लाइव में जुड़े हो, देख भी रहे हो. इंग्लिश, ओनली इंग्लिश. रिटन डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए एक फुल स्टॉप इसमें थोड़ा सा और लिख लीजिए ताकि आपको इसको फाइंड करना आसान हो जाए. दिस क्लॉज ऑफन स्टार्ट्स विद, this clause often starts with comma or dash. This clause often starts with comma or dash. Example here. Honesty, honesty, written honesty, comma, they say, say, they say, comma, is the best policy, is the best policy. Honesty, comma, they say, comma, is the best policy. Where is parenthetical clause in this sentence? They say. They say को हटा करके पढ़िए. सेंटेंस की मीनिंग में कोई चेंज हुआ? इसके अलावा कुछ भी हटा दोगे तो मीनिंग बदल जाएगी. ऑनेस्टी हटा दो तो मीनिंग बदल जाएगी. दे से इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या बेस्ट पॉलिसी? इज द बेस्ट पॉलिसी हटा दो, ऑनेस्टी दे से ये भी हट जाएगी. बट दे से को हटा दो तो सेंटेंस की मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा. सेकंड एग्जांपल लिखिए. सर आप अपना फेस दिखा सकते हैं जिससे मैं अपना क्वेश्चन. आई कांट आंसर योर क्वेश्चन पेपर बिकॉज आई एम टेकिंग क्लास राइट नाउ. बेटा अभी क्वेश्चन पेपर हम आपका आंसर नहीं कर सकते. यू कैन सेंड मी ऑन माई व्हाट्सएप इफ यू वांट आंसर्स. देयर मस्ट बी माई व्हाट्सएप नंबर 968968558637. थंबनेल पे देखिएगा, व्हाट्सएप नंबर होगा. यस. सो सेकंड एग्जांपल लिखिए. You see, comma, we lost the way. We lost the way. Where is parenthetical clause? You see. You. You see will be. ऐसा बोलते ना यार, रास्ता खो गया ना, देखा रास्ता खो गए. You see we lost the way. So you see will be here parenthetical clause. Next, coordinate clause. Coordinate clause. Which clause are we going to discuss now? Coordinate clause. जी जी भैया. Coordinate clause. Right. Coordinate clause. The clause which doesn't tell about
the clause which doesn't tell about the clause which doesn't tell about the verb, comma, noun, comma, pronoun, the verb, comma, noun, pronoun of the other clause इंग्लिश क्लास इज गोइंग ऑन यार शिव शंकर ये केमिस्ट्री आपको लग रही है वाह यार यू सो जीनियस Brian, the clause which doesn't tell about the verb, noun, pronoun of the other clause, on the contrary, it tells a new fact. It tells a new fact. Hidden? It's called कौन सा क्लॉज कोऑर्डिनेट प्यारे बच्चों ऐसा क्लॉज जो अपने पहले आए हुए क्लॉज के वर्ब नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ भी ना बताता हो बल्कि एक नई कहानी बताता हो एक नई बात बताता हो एक नई सच्चाई बताता हो कि भाई ऐसी चीज है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज एग्जांपल लिखिए माई शर्ट इज ब्लैक माई शर्ट इज ब्लैक बट माई कोट इज वाइट माई शर्ट इज black but my coat is white my shirt is black but my coat is white अब देखिए जो दूसरा क्लॉज है my coat is white वो पहले आए हुए क्लॉज के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा कि शर्ट ब्लैक है तो अच्छी लग रही है राइट स्मार्ट लग रहे हैं और या कुछ और चीजें हैं डरावनी लग रही है वो एक नई कहानी बता रहा है कि कोट इज वाइट राइट ये जो कोट इज वाइट है ये कौन सा क्लॉज होगा क्लॉज माई शर्ट इज ब्लैक कौन सा क्लॉज है बच्चों मेन क्लॉज क्योंकि कंजंक्शन नहीं लगा है और यदि किसी वाक्य की शुरुआत कंजंक्शन से ना हो तो पहला क्लॉज मेन क्लॉज कहलाता है फर्स्ट वन विल बी मेन क्लॉज एंड सेकंड क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज देख लिया अब नोट लिखिए coordinate clause starts with coordinate clause starts with लग बस ऐसा रहा है जैसे आप बच्चों को समझा रहे हो या सर क्वेश्चन भी तो नहीं कर रहे ये आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आज आप पहले दिन यहाँ जुड़े हो और ये कहानी लंबे समय से चल रही है इसलिए जब कोई कहानी में बीच में कूद के बैठता है सुनने उसे ऐसा ही लगता है बेटा शुरू से कहानी सुन रहे होते तो आपको पता चलता अब बीच में कूद के आप पूछो कि ये क्या है वो क्या है ये कैसा है तो आपको नहीं समझ में आएगा आर यू गेटिंग गाइस इन लोग को समझ में आ रहा है शुरू से कहानी सुनना कभी बैठना देन यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड इनको इस कहानी को सुनते हुए अप्रॉक्स 3 मंथ्स हो चुके 3-4 मंथ्स हो चुके 4 मंथ्स ऑलमोस्ट ऑल राइट coordinate clause starts with coordinate conjunctions coordinate clause starts with coordinate conjunctions कोऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत बच्चों कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से होती है कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस अब कोई पूछे क्या कहलाते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस तो लिखिएगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस लाइक
like but, B-U-T, but, comma, and, comma, while, W-H-I-L-E, while. Written, comma, whereas. Who? No, Way. she didn't. Yeah. They're saying. Actually, he wanted to write, I think, listening. Yeah. He wrote something else. Yeah. Spelling mistake. Okay. Written, whereas, while. Not only, but also, neither, either, etc. Neither, either. अब याद रखना, शुरुआत होती है बच्चों, शुरुआत मीन्स इनके बाद का जो क्लॉज आएगा वो होगा कोऑर्डिनेट क्लॉज. एग्जांपल लिखिए. I am learning English and he is learning computer. I'm learning English, but he's learning computer. And I'm learning English and he's learning computer. Written? देखिए, आई एम लर्निंग इंग्लिश के बारे में दूसरा जो क्लॉज है कुछ नहीं बता रहा है, राइट. ही इज लर्निंग कंप्यूटर, वो नई बात बता रहा है. भैया वो कंप्यूटर सीख रहा है, वो नहीं बता रहा इंग्लिश सीख रहे हो तो आप एंजॉय कर रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, बोल पा रहे हो, लाइक दैट. ओके, इज लर्निंग कंप्यूटर. सो ही इज लर्निंग कंप्यूटर विल बी विच क्लॉज? कोऑर्डिनेट क्लॉज. शुरुआत एंड से हो रही है ना, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड. Okay. The rest of the things I'll teach you tomorrow. So please practice. इसको practice करें and learn clauses. Clauses are very important. जैसे ही clause complete होंगे, dear students, you have to make the chart of clauses. Okay. If you make the chart of clauses, so you can easily learn clauses. You will understand. Mainly clause. Mainly clauses. There are 4 types. Okay. Parenthetical, subordinate, your coordinate, main clause, and parenthetical. 4. Okay. Then your subordinate clause has 3 types. Subordinate clause has 3 types. Noun clause, adjective clause, adverb clause. Adverb clause has 9 types. How many types? 9 types. Adverbial clause of time, place, reason, contrast, purpose, result, manner. Okay. Yes, these you have to learn. And after completion, so if you make a chart, so you will easily understand. Come again? Yeah, I gave them a question, write the parts of his speech and give an example. So they were writing from here. Noun and one example, pronoun, verb, adverb. What can we do? But that is not good for them. I believe in my students very much. All right, dear students, thank you so much. I hope you have enjoyed today's class. So we want to improve her communication skills. Join DSEL. No, I won't say just join DSEL, but all the students, listen dear Shiv Shankar, you already know what you have to do. कौन सा मेरे बताने से आप कोई नई चीज मैं बता रहा हूँ आपको. मैं ही बोलूंगा रीड करिए खूब,
रीडिंग आपको खुद ही पता है मुझे करनी पड़ेगी. राइट करिए, राइट, रीड करिए, राइट करिए, लिसन करिए, स्पीक करिए. 4 qualities are required to master any language in the world. How many qualities? 4 qualities, right? So you just master those 4 qualities. Okay. So tomorrow we will finish clauses and we'll practice that. Do we have any topic for debate or anything? Let's have extempore. What do you say? Why no, sir? Again, always no, sir. Why don't you want to have extempore? You must see your word power, vocab. You for checking your vocab, extempore is the best option. You should go for it. I have one question. Yeah. In Arif. perfect participle, Mhm. the example is having had a bath, I went to temple. Mhm. So where we have to underline Having had. having had, Yeah. and when we don't have to underline. No, that is another clause. That is totally another part. We have to underline having and had. Yeah. It starts with having an MV third. Having an MV third. Having learnt English. Having learnt. Having spoken the topic. Having spoken. But Right. if I'm talking about another example, while joining DSL, I learned English. Yeah, I have to underline joining. Joining. Present participle. Participle is a word, no? That's right. All right, dear students. Right now, we don't have time, dear students. We don't have time. He's saying अपनी feelings को express नहीं है. Here all the students express their feeling freely, बेटा. मैं कोई स्कूल टीचर नहीं हूँ जो बच्चों को मारता पीटता हूँ. ये मुझसे नहीं आता. I just want to tell you. जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा. आप लंदन में बैठ के एक दिन में जज नहीं कर सकते हमारी क्लासेस. Right, students? Saying students have fear, that's why they can't express.